अस्सलाम वालेकुम। आज का फार्माकोलॉजी लेक्चर होगा मैक्रोलाइड्स के बारे में। सो पॉज द वीडियो एंड रीड दिस एंड लेट्स मूव ऑन। तो मैक्रोलाइड्स जो हैं दे आर अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और इसमें डिफरेंट इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस वगैरह के लिए ये यूज़ होते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस और ओटाइटिस मीडिया इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स में भी ये इंडिकेटेड होते हैं। इनको मैक्रोलाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर होता है एंड वन और मोर डीऑक्सी शुगर्स आर अटैच्ड। एज अ स्टूडेंट आपको आसानी होगी अगर आप ये बात याद रखें कि सारे मैक्रोलाइड्स के नाम के एंड में थ्रोमाइसिन आता है। सिर्फ माइसिन याद करना काफ़ी नहीं है क्योंकि उसमें फिर और ड्रग्स भी आ जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर थ्रोमाइसिन, ओके। इट विल मेक थिंग्स वेरी मच ईजी फॉर यू। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर आते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर भी प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। तो जो बैक्टीरियल राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है उसके 50S सब यूनिट के साथ ये ड्रग बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ट्रांसलोकेशन नहीं कर सकता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती और इसलिए बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो प्रोटीन्स दरकार हैं वो नहीं बन सकते। So it is considered bacteriostatic. The difference between bacteriostatic and bactericidal is basically that bacteriostatic वो ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और बैक्टीरियोसिडल वो होते हैं जो कि डायरेक्ट उसको किल कर देते हैं। हाई डोजेस के ऊपर मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियोसिडल भी होते हैं लेकिन जनरली दे आर कंसिडर्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। An interesting MCQ point is that clindamycin और chloramphenicol एक और ड्रग कैटेगरी को बिलोंग करने वाले ड्रग्स हैं, लेकिन इनकी बाइंडिंग साइट इज़ वेरी क्लोज टू मैक्रोलाइड्स की बाइंडिंग साइट। Also, there's another thing called ketolides, which are very similar to macrolides in terms of their coverage of bacteria. But they are basically, if you compare them, to ketolides are better than macrolides in the sense that if there's drug resistance in a bacteria for macrolide, there's a good chance that a ketolide can still help in that infection. So let's talk about target organisms. So gram-positive aerobes may strep pneumoniae, MSSA, Corynebacterium diphtheria, but not enterococci. And then gram-negative aerobes और उसके अलावा नो एंटेरोबैक्टीरिया नॉट एंटेरोबैक्टीरियाशाई शिगेला और इकोलाई वगैरह। सो अगर इन सबको कंसिडर करें तो इट इज़ गुड फॉर ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, STIs which is sexually transmitted infections, typhoid fever and H. pylori infection. Spectrum increases from erythro to azithro to clarithromycin, meaning to say कि erythromycin का सबसे कम स्पेक्ट्रम है और क्लैरिथ्रो का सबसे ज़्यादा है। तो ये एक टेबल मैंने बनाया है। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। हर ड्रग की प्रिस्क्राइब करने वाली जो डोज है वो डॉक्टर पेशेंट के और इन्फेक्शन के हिसाब से देता है। काइंडली डू नॉट यूज़ this table as a basis to prescribe or take drugs, okay? This is just for teaching purpose. So यहाँ पे erythromycin, clarithromycin, azithromycin और telithromycin को मैंने मेंशन किया हुआ है। ये एक जनरलाइज्ड डोजेज मेंशन की हुई है और पाकिस्तान में जो कॉमन ब्रांड्स हैं जो आते हैं मार्केट में इनके लिए वो मेंशन किए हुए हैं। So let's talk about erythromycin. एरिथ्रोमाइसिन बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है इस ड्रग क्लास का। सो इट्स फर्स्ट ऑफ द मैक्रोलाइड्स। ये पेनिसिलिन जी वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो पेनिसिलिन जी कवर करती है ये भी उन्हीं को कवर करता है। तो अगर एक पेशेंट एलर्जिक है टू पेनिसिलिन विच इज़ वेरी कॉमन तो एरिथ्रोमाइसिन इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव। एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस अलबत्ता बहुत कॉमन अब हो गई है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड, तो हम ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड पर कंसिडर करते हैं। आईवी एरिथ्रोमाइसिन के बारे में जो एक कॉमन पॉइंट है एमसीक्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें यह है कि इसमें हाई इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। ऑल्सो हाई डोज एरिथ्रोमाइसिन ट्रांजिएंट डेफनेस भी करा सकती है। एरिथ्रोमाइसिन with एस्टोलेट combination is also reported to cause cholestatic jaundice.
Erythromycin distributes into all body fluids except the CSF, and it is one of the few antibiotics जो कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड में और मैक्रोफेजेस के अंदर भी एक्यूमुलेट होती है। ये एसिड स्टेबल नहीं है, इसलिए इसकी इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस बनती हैं ताकि जब वो स्टमक में जाएं तो वो वक्त से पहले जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। प्रेगनेंसी में इसका एविडेंस ऑफ रिस्क नहीं है। लैक्टेशन में कॉशन इज एडवाइज्ड, अगेन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग देम इन एनी केस। और इसकी इंडिकेशंस में आ जाता है एरिथ्रोमाइसिन जनरली एक्ने, सिफिलिस, क्लैमिडिया, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शन, लाइम डिजीज के लिए इंडिकेटेड होते हैं। इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल में जो पेशेंट्स है प्रोन हैं वो इसको कॉशियसली यूज़ करें या ना करें। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स इसको यूज़ नहीं करें। किडनी या लिवर की इनसफिशिएंसी वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी इसको अवॉइड करें। सो दिस इज जस्ट अ पिक्चर फॉर इंटरेस्ट। ये मार्केट में ये वाले ब्रांड्स आते हैं पाकिस्तान में। Now we talk about azithromycin. Azithromycin is very very common. I think it's the most commonly prescribed macrolide. तो इसकी सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ है अमंग द अदर मैक्रोलाइड्स। ये एरिथ्रोमाइसिन से लेस इफेक्टिव है फॉर स्ट्रेप्टोकोका एंड स्टैफिलोकोकाई, but it is far more active than erythromycin for respiratory infections. It is preferred therapy for urethritis due to Chlamydia trachomatis. It also has activity against Mycobacterium avium intracellular complex in patients with AIDS and disseminated infections. So generally वही infections हैं जो मैंने शुरू में mention की थी, upper lower respiratory tract infection, otitis media, skin and soft tissue infections, chlamydia infection. इसकी इंटरैक्शंस हैं कुछ ड्रग्स के साथ, ये आप नोट कर लें, अर्गोट डेरिवेटिव्स, एंटासिड्स, साइक्लोस्पोरिन, डाइजॉक्सिन एंड वार्फरिन। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के केस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे देयर इज नो रिस्क इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हैव टू यूज़ विद कॉशन। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है हेपेटिक डिजीज और साइड इफेक्ट्स में जीआई अपसेट, एलर्जी, रैश, फोटोसेंसिटिविटी, लिवर डैमेज, कन्वल्जन्स, वर्टाइगो, डिजीनेस, किडनी डैमेज, somnolence, arrhythmias, taste disturbance, Steven Johnson syndrome, and TEN है। So this is different brands in the market for azithromycin. I think the most popular of them is probably Azomax. So yeah, let's move on to clarithromycin. Clarithromycin is similar to erythromycin, but it also covers Haemophilus influenza. Or its activity against chlamydia, legionella, moraxella, and urea plasma species is better than erythromycin. ये ज़्यादा एसिड स्टेबल है, ये प्रेगनेंसी लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए। इसके इंडिकेशंस वही हैं जनरली, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस वगैरह, और प्रिकॉशंस में रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट। इसके इंटरेक्शंस हैं डिफरेंट ड्रग्स के साथ दैट आर मेंशन्ड हियर। So, cisapride, got derivatives, theophylline, oral anticoagulants, and digoxin. Adverse effects में GI upset, glossitis, oral monalia, tongue or tooth discoloration, allergy, liver damage, reversible hearing loss, QT prolongation, etc. So, yeah, now we'll talk about telithromycin. So telithromycin is strictly speaking not a macrolide, it is a ketolide, but it's mentioned here because of the similar coverage. So इसका azithromycin जैसा antibacterial spectrum है और its structure of ketolides neutralizes the most common resistance mechanisms that makes macrolides ineffective, जिसका basically मतलब ये है कि इन इन्फेक्शंस में जहाँ मैक्रोलाइड भी चल सकती थी लेकिन रेजिस्टेंस हो गई है तो प्रॉबेबली कीटोलाइड काम करेगी। So it's a good option. Also, telithromycin should not be given to patients with myasthenia gravis, and also it has a potential to prolong the QT interval or in some patients, so you have to avoid it in patients with congenital QT prolongation or proarrhythmic conditions. Also use with caution with patients who have compromised renal function. Then we talk about roxithromycin. ये relatively newer है, इसलिए इसको मैंने टेबल में मेंशन नहीं किया था। ब्रीफली स्पीकिंग इसके इंटरैक्शंस गॉट डेरिवेटिव्स, कार्बामाजेपिन, थियोफाइलिन, साइक्लोस्पोरिन, वार्फरिन के साथ है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में डॉक्टर से पूछ के यूज़ करना चाहिए। वैसे प्रेगनेंसी में नो एविडेंस ऑफ रिस्क इन ह्यूमंस एंड लैक्टेशन में कॉशन इज एडवाइज्ड।
Infections are pretty much similar. Prophylaxis of meningococcal meningitis in subjects to who have come in contact with the patient. So that's a distinguishing point. और इसमें precautions में hepatic insufficiency है. Now, exam key points. Both clarithro and azithromycin show cross resistance with erythromycin, but telithromycin can be effective against macrolide resistant organisms. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है. उसके अलावा metabolites of erythromycin and azithromycin they appear in the bile. Clarithromycin के metabolites they appear in the urine. Okay. Azithro, clarithro and erythro they do not penetrate the CNS. इसको मैंने ACE के mnemonic से याद किया है. A for azithro, C for clarithro and E for erythromycin. ये सारे CNS को penetrate नहीं करते. GI distress generally इन सबका ही side effect है. GI distress में nausea, vomiting, diarrhea और abdominal pain आ जाता है. So it's common with again think ACE, right? That's a very useful mnemonic here also. और ये इसलिए होता है क्योंकि ये gastric motility वाले जो receptors हैं उनको stimulate करते हैं जिसकी वजह से GI distress होता है. एजिथ्रोमाइसिन के अलावा सारे एसिड स्टेबल हैं, ये भी मैंने मेंशन किया था आपको. इसीलिए एरिथ्रोमाइसिन जो है वो इंटेरोकोटेड टैबलेट्स में आती है. फिर जो लिवर फंक्शन जिन लोगों का कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें कॉशियसली यूज़ करनी चाहिए, अव्वल तो देनी नहीं चाहिए, ठीक है. तो एजिथ्रोमाइसिन जो है उसके रिपोर्टेडली कम इंटरेक्शंस हैं बाकी ड्रग्स के साथ, और ऑल अदर्स दे इनहिबिट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स. तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि P450 इनहिबिटर्स हैं और ये एंजाइम होता है लिवर का, और जब ये इंटरेक्शन होता है तो बाकी जो ड्रग्स अगर पेशेंट जो है वो साइमल्टेनियसली और भी ड्रग्स ले रहा है तो उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, ठीक है. सो यू हैव टू मॉनिटर द LFTs एंड ऑल्सो ड्रग लेवल्स. सो क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन की ओरल अब्जॉर्प्शन बेहतर है. अदर साइड इफ़ेक्ट्स में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वेरी रेयर बट दे शुड बी मेंशन्ड. Or yeah, that was it for macrolides. I hope you learned something and I hope you liked this video. If you liked it, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow my Instagram and Facebook page. It's very interesting. I upload almost regularly with informative medical posts. So if you're into that, please follow those channels. And inshallah, I'll be back with another video. Allah.